Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most beneficent and most merciful. My dear friends, अस्सलाम वालेकुम. This is your friend प्याज अली और आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 3। और क्लास 3 में जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा वो है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में काफ़ी साइंस भी हमारा कवर हो जाता है क्योंकि साइंस हमारा क्लास 4 से शुरू हो रहा है। तो क्लास 4 से पहले जितने भी हमारे साइंस के एमसीक्यूज थे वो सारे हमारे जनरल नॉलेज में ही कवर हो रहे थे। तो क्लास 3 जो है उसमें काफ़ी साइंस के एमसीक्यूज हैं और काफ़ी हिस्ट्री के एमसीक्यूज भी हैं उसमें, जिसमें हमारा इन्वेंशन आ गए और काफ़ी सिंध की हिस्ट्री आ गई, कराची की हिस्ट्री आ गई। तो वो सारे आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा जनरल नॉलेज क्लास 3। लेट्स स्टार्ट जनरल नॉलेज फॉर क्लास 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। इसमें हमारा पॉइंट नंबर 1 है वाटर ऑन हीटिंग टर्न्स टू डैश एंड राइजेस इन द एयर, ए वाटर वेपर बी सॉलिड। तो यहाँ जैसे कि आपको पता है कि जब भी पानी को उबाला जाता है तो वो भाप बन के हवा में उड़ जाता है, तो उनको हम कहते हैं वाटर वेपर्स। तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो है ए वाटर वेपर। चलिए सेकंड पे आ जाते हैं। द डैश कूल्स एंड बिकम ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, ए गैस बी वाटर वेपर। तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो है बी वाटर वेपर। Come to the point number 3. When clouds become dash with water, the water falls on the ground as rain and snow. Option are A heavy, B light. तो करेक्ट आंसर है यार ए हेवी, क्योंकि जब भी बादल हेवी हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं पानी से, तो वो एज रेन एंड स्नो फॉल्स करते हैं ग्राउंड पे। तो हमारा सही जवाब है यहाँ पे ए हेवी। कम टू द पॉइंट नंबर 4. A dash is the place where plants and animals live and grow. A atmosphere, B habitat. So correct answer here is B habitat. Point number 5. Desert dash stores fat in its body. A tortoise, B cactus. So a correct answer is A tortoise. Come to the point number 6. Desert dash has sharp spines to protect them from plant-eating animals. A plants, B animals. So correct answer here is A plants. Come to the point number 7. Desert plants flower dash at night and dash up in the day. Two options are A open and close, B close and open. So the correct answer here is A, because जितने भी हमारे डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनके जो फ्लावर होते हैं वो नाइट के टाइम मीन्स रात के टाइम ही खुलते हैं और दिन के टाइम अमूमन बंद ही होते हैं। तो हमारा सही जवाब है यहाँ पे ए ओपन एट नाइट एंड क्लोज अप इन द डे। कम टू द पॉइंट नंबर 8. ऑल foreheads in this world are dash same. ए नॉट सेम, बी एग्जैक्टली सेम। तो इसमें जो हमारा सही जवाब है वो है ए नॉट, बिकॉज जितने भी हमारे फॉरेट्स हैं इस दुनिया में वो एक जैसे नहीं हैं। तो चलिए पॉइंट नंबर 9 पे आ जाते हैं। द एडिक्शन ऑफ एनिमल्स टू ब्लेम देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड डैश। ए कैमोफ्लेज, बी हैबिटेशन। करेक्ट आंसर इज ए। कम टू द पॉइंट नंबर 10 नाउ। डैश इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। दिस इज वेरी इजी, आपको यकीनन आ ही रहा होगा ये। इसमें हमारा दो ऑप्शन जो हैं वो पहले सुन लें आप। ए हमारा सन, बी मून। और सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। मून को जो है वो जो मून की जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है ऑफ सन। तो करेक्ट आंसर है इज ए सन। कम टू द पॉइंट नंबर 11. There will be no life on earth without the dash. A moon, B sun. So this is also very easy, क्योंकि without moon we can survive, because ये हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि मून है या नहीं है। तो without sun we cannot live, because जितने भी हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेसेस होते हैं और जितनी भी हमारी एनर्जी सोर्सेस हैं हमारे खाने के, वो सारे एनर्जी ऑफ लाइट मींस सन एनर्जी, वो उसी की वजह से ही प्रोड्यूस होती हैं। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हमारी प्रोड्यूस होती हैं वो सोलर एनर्जी यूज़ करती हैं और काफ़ी हमें बेनिफिट होता है सोलर एनर्जी से। तो हमारे यहाँ पे जो सही जवाब है वो है
sun. Come to the point number 12. Plants use dash energy to produce food. ये वही आ गया. A solar, B kinetic. So correct answer is A solar. Point number 13. Dash have heavy body and furry coat. A zebra, B polar bear. So this is also very easy because furry coat and heavy body is related to polar bear because they have furry coat to protect themselves from cold weather. Come to the point number 14. Chick uses a small hump, means egg tooth, on its beak to make holes around the dash. A shell, B food. So correct answer here is A shell. Come to the point number 15 now. Female chicken is called dash, male chicken is called dash. इसमें दो ऑप्शन है हमारे A hen and rooster, B female and male. So correct answer is A hen and rooster. Female chicken is called hen and male chicken is called rooster. Come to the point number 16. First step of life cycle of butterfly is dash. A caterpillar, B egg. So correct answer is B egg. Come to the point number 17. Second stage of life cycle of butterfly is A caterpillar, B chrysalis. तो जो हमारी सेकंड स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई इज वो है हमारी क्राइसलेस. और आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि इन चीज़ों को आप पिक्चर वाइज भी स्टडी कर लें क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप इनको एक बार देख लेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएंगी. तो चलिए पॉइंट नंबर 18. थर्ड स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई इज A chrysalis, B caterpillar. So chrysalis is the second stage. So third stage is B caterpillar. Now point number 19. Butterfly is the type of A insect, B bird. The correct answer here is A insect because butterfly is not a bird. It is a insect. Come to the point number 20. The caterpillar eats dash. A leaves, B stems. Correct answer here is A leaves. Come to the point number 21 now. Butterfly comes into the world from a dash. A chrysalis, B caterpillar. Correct answer here is B caterpillar because chrysalis is the second stage. So after second stage, chrysalis become caterpillar and caterpillar later then become butterfly. So butterfly come into the world from caterpillar. Come to the point number 22 now. Egg of frogs hatches into dash. A tadpole, B spawn. So correct answer is A tadpole. Come to the point number 23 now. Tadpole breathe using dash and have a tail. A gills, B nose. So tadpoles जो होते हैं वो पानी में ही रहते हैं तो वो gills यूज करते हैं for breathing. So correct answer is A gills. Come to the point number 24 now. Dash is the almost mature state of frog, but he still has some of its tail in that stage. A froglet, B tadpole. So tadpole is the early stage. After tadpole, frog become froglet. So froglet is the stage. Come to the point number 25 now. Tail of frog dashed by their body. A observe, B throw away. So correct answer is A absorb. Come to the point number 26. Dash help us in our growth. A proteins, B carbohydrates. So correct answer is A proteins because proteins help us in our growth. Point number 27. Dash gives us energy. A carbohydrates, B proteins. So प्रोटीन तो हमारी ग्रोथ में मदद करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो है कार्बोहाइड्रेट आफ्टर प्रोटीन. तो हमारा यहाँ पे सही जवाब है ए कार्बोहाइड्रेट. कम टू द पॉइंट नंबर 28 नाउ. डैश स्टोर एनर्जी. ए फैट, बी बॉन्स. करेक्ट आंसर है फैट्स, ए. Come to the point number 29. Teeth which are used for grinding of food are called
A bicuspids, B incisors. तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो है ए। पॉइंट नंबर 30 पे आ जाते हैं। Incisor teeth job is dash. A. Tearing apart food. B. Crushing food. So correct answer is A. Tearing apart food. Incisor teeth वही होते हैं जो हमारे सामने हैं, तो इनका काम क्या होता है? खाने को तोड़ना। Tearing apart food. Correct answer is A. Come to the point number 31 now. Topmost layer of earth is known as the clay B soil. Don't confuse yourself here with clay because the correct answer here is B soil. Come to the point number 32 now. Dash is composed of particles of rocks, minerals, and living things like earthworms. A topsoil, B bottom soil. The correct answer is A topsoil. Come to the point number 33 now. Largest city of Pakistan is Dash. The Karachi, B Lahore. This is very easy. ये तो आपको आ रहा होगा. Karachi is the largest city of Pakistan. Lahore is second largest. Point number 34 now. People built wall around the Karachi in early days, and they have two gates called Dash and Dash. A Khara Darwaza, Meetha Darwaza, B Seaside and Village Side. So correct answer is A Khara Darwaza and Meetha Darwaza. Come to the point number 35 now. Kaloda and Talpur era was from 1730 to 1843 and B 1900 to 1947. Correct answer is obviously A 1730 to 1843. Come to the point number 36 now. Kalhoda asked the ruler of Dash to help them to fight with Talpur. A. Kalat B Quetta. Correct answer is A. Kalat. और यहाँ पे दूसरी चीज़ जो है नोट करने वाली वो ये है कि जब कलहोड़ों ने सिंध को फतह किया फ्रॉम तालपुर, तो उन्होंने कराची को एज अ गिफ्ट कलात के जो रूरल थे, जो हाकिम थे कलात के, उनको एज अ गिफ्ट दिया था कराची। तो ये आप जहन में बिठा लीजिएगा, ये भी मेन पॉइंट है। चलिए पॉइंट नंबर 37। Dash built the fort at Manora. A Talpur, B Kalhodas. Correct answer is A Talpur. Come to the point number 38. British era started from Dash and ended at 1947. A 1839, B 1788. So correct answer is A. Come to the point number 39 now. First airport of British India was made at Dash in 1924 at Karachi or at Islamabad. So correct answer is A, Karachi. Come to the point number 40 now. Karachi was the capital city of Pakistan for dash years. A 13, B 15. So correct answer is A 13 years. Point number 41. In dash, Islamabad became capital of Pakistan in 1960, B 1962. तो कराची 13 साल तक कैपिटल था, तो 1947 से 1960 तक होते हैं हमारे 13 ईयर्स। तो हमारा सही जवाब है यहाँ पे 1960। 42. Conflict can be over resources, power and dash according to the book. पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए वैल्यूज, सी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा according to the book वो है A values. Okay, come to the point number 43. A good way to resolve conflict is dash. A solution, B I messages. So correct answer is B I messages. Come to the point number 44 now. Dash are statements about your feeling that tells other person what is bothering you and why. A I messages, B SMS. So correct answer is I messages, A. Come to the point number 45 now. Earth takes dash on its axis and dash around the sun. A. Rotation revolves, B. Revolves rotation. So correct answer is A. Rotation revolves. Earth takes rotation on its axis and revolves around the sun. Okay, come to the point number 46 now. Sun is made up of dash gases. A hot, B hydrogen. So correct answer is A hot gases.
Come to the point number 47 now. Days of Earth called day and night. A rotation, B revolution. So correct answer is A rotation. Point number 48. There are days cardinal directions. A4, B, 5. Correct answer is A4. 49. Dash is formed when light cannot travel through an object. A shadow, B reflection. So as you know, this is a shadow. Shadow is formed when light cannot travel through an object. Point 50. Telephone invented by dash. This is very easy. आपको मालूम ही होगा. ऑप्शन देख लेते हैं फिर भी. A. Alexander Graham Bell, B. Edison. So answer is Alexander Graham Bell. 51. Light bulb invented by A. Alexander Graham Bell, B. Thomas Edison. ये भी यकीनन आपको पता होगा. का सही जवाब है B. Thomas Edison. 52. Airplane invented by A. Wright brothers, B. Edison. Correct answer is A. Wright brothers. 53. Bicycle invented by Dash. A. Wooljack, B. Perry Lalman. So correct answer is B. Come to the point number 54 now. First successful tractor invented by Dash in 1892. A. John Foley, B. Thomas Bryan. Correct answer is A. Okay, so 55. Tractors that are used today were built by Dash in 1920. A. Wright brothers, B. Charles Hart and Charles Park. Correct answer is B. Now point number 56. Dash invented Waltro. A. Edison, B. George B. Mistral. So correct answer is B. Option number 57 पे आते हैं अब. Dash is the mother of invention. ये तो यकीनन आपको आ ही रहा होगा. क्या है? वो है हमारा B. Necessity. Because necessity is the mother of invention. Point number 58. Dash invented earmuffs. A. Chester Greenwood, B. John Dee. Correct answer is A. Chester Greenwood. Come to the point number 59 now. Vacuum cleaner invented by Dash in 1901. A. Hobart Cecil B. Newton Pascal. Correct answer is A. Hobart Cecil. Point number 60. First Dash was made by Orville and Wilbur Wright in 1903. ये वही राइट ब्रदर्स हैं जिनकी हमने ऊपर भी बात की, जिन्होंने एयरक्राफ्ट बनाया है. तो यहाँ पे ऑप्शन है एयरक्राफ्ट और कार. इसमें सही ऑप्शन हमारा ए ही है, एयरक्राफ्ट. Come to the point number 61 now. Auto wagon was invented by Dash in 1907. A. National Harvester, B. International Harvester. So auto wagon was invented by the International Harvester. Point number 62 now. Tank was invented by Dash in 1950. A. Ernest Trunton, B. Thomas Bryan. Correct answer is A. Ernest Trunton. Come to the point number 63 now. Alexander Fleming developed Dash for medical use in 1928. A. हमारा पेनिसिलिन, B. एंटीबॉडी. तो करेक्ट आंसर है हमारा A. पेनिसिलिन. Come to the point number 64 now. Microwave oven was invented by Dash in 1946. A. Michael Jordan, B. Percy Spencer. Correct answer is B. 65. Transistors were invented by John Barden and Walter Brattain under the supervision of A. John Bright, B. William Shockley. So correct answer is B. William Shockley. Point number 66. First personal computer was invented by Dash. A. IBM, B. HP. So the correct answer is IBM, because IBM holds the honor of inventing first personal computer.
67. IC invented by A. Jack Kilby, B. Williams. The correct answer is A. Integrated circuit was invented by Jack Kilby. 60. First cell phone was made in dash 1860, 1960. The correct answer is B. 1960. 69. Dr. Martin Cooper of Motorola brought to the market the first heavy-duty cellular phone model for the use of people in 1980 or 2000. The correct answer is A. 1980. Point number 70 now. Ray Camilson sent the first email in 1971, 2001. Correct answer is A. 1971. 71 पे आते हैं अब. Internet protocol suite was developed by Winton Cerf and Dash. ऑप्शन है हमारे रॉबर्ट ई कॉन, बी चार्ल्स बेबेज. तो करेक्ट आंसर इज ए. तो पॉइंट नंबर 72 पे आते हैं अब. फर्स्ट टेक्स्ट मैसेज वाज सेंट बाय यूजिंग GSM इन 1899, बी 1985. करेक्ट आंसर इज बी 1985. 73. www was invented by Dash in Switzerland in 1920. A. John Snow, B. Tim Berners-Lee. So correct answer is B. 74. DVD invented in Dash. A. 2002, B. 1995. Correct answer is B. 1995. 75. Charles Babbage invented the first computer of the world in 1833. Was a calculating machine called A. Analysis engine, B. Analytical engine. So correct answer is B. Analytical engine. 26. First electronic computer was invented in Dash. It was called ENIAC, Electronic Numerical Integrated and Computer. The options are A. 1950, B. 1946. The correct answer is B. 1946. Point number 77. ENIAC powered by Dash engine. A. Steam, B. Electrical. तो काफ़ी आप में से सोचेंगे कि ENIAC जो है इसका जो सही जवाब है वो है इलेक्ट्रिकल इंजन, लेकिन बिल्कुल नहीं. इसका जो सही जवाब है वो है स्टीम इंजन. ENIAC powered by steam engine. To remember this. Point number 78 now. Phonograph or record player was invented by Dash in 1877. A. Thomas Brown, B. Thomas Edison. So correct answer is D. Thomas Edison. Point number 79 now. Wheel and axle reduces the dash a fraction the force. का जो सही जवाब है वो है हमारा A. fraction. Point number 80. Dash helps us to move object. A. Inclined plane, B. wedge. So correct answer is A. Inclined plane. Point number 81. Dash used to raise and lower objects. A. Lever, B. Pulley. Correct answer is B. Pulley. Point number 82. Wedge is also called A. Lever, B. Ramp. So correct answer here is B. Ramp. Point number 83 now. To draw water from a well, we need dash a pulley, a wedge. We need a pulley. Correct answer is A. Point number 84. To move loaded trolley, we have to dash it. A. Push it, B. Broke it. Correct answer is A. Push it. Point number 85 now. To stretch the bow, the archer applies the force that causes the change in its dash, a shape, the motion. So correct answer is A. Shape. Come to the 86 number point now. When two equal forces are acting on an object in the opposite direction, the object will dash in any direction. A. Not move, B. Move. So correct answer is A. Not move. Because forces are equal, so the object will not move. 87. Three public services are education, healthcare, and dash. The water supply, the building dam. So correct answer is
ए वाटर सप्लाई अकॉर्डिंग टू द बॉक्स। तो ये हमारा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह जी के क्लास 3 फाइनल। तो एंड में आपको आंसर की दी गई है और आंसर की आपने ज़रूर यूज़ करनी है और आपने टेस्ट खुद अटेम्प्ट करना है। और उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट नोट्स भी दिए गए हैं एंड में, आप अगर चाहें तो वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए आपको मैं खुदा हाफिज़ कहूँगा और एंड में रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।